आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो एक्यूट्स लेके आते हैं। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको पढ़ाया जाता था कि होम्योपैथी वर्क्स एक्सीलेंटली इन क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक में ये काम करता है, क्रॉनिक में वो काम करता है। तो हमारा माइंडसेट हो गया था कि भी वो क्रॉनिक में ही काम करता है। किसी ने ऐसे नहीं समझाया कि भी एक्यूट में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। दैट इज व्हाई होम्योपैथ्स गेट्स अफ्रेड टू प्रिस्क्राइब इन एक्यूट्स। और वही डर आपका निकालना है। That is why I am going to take this session. ये सेशन शायद लंबा भी चल सकता है। So फीवर का हमारा सेशन बाकी है, I know it, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। That is why I have started with this acutes. Yes, Monica, I have used ammonium car for typical Zandu palm, yes, dependent patient and found result within minutes. Great, excellent. These are the typical symptoms and which is clinically proven since 40 years in our practice, guys. So जो specific remedies है उसमें it works no doubtable, कोई doubt ही नहीं that is going to work. But when you share it to us, it helps us as a motivation, as already I told you, तो share करना. So guys, warts के patient आते हैं आपके वहाँ पे. Nowadays, skin specialists, dermatologists are referring patient to a homeopath for warts. They know कि warts के अंदर all the remedies, all the therapy is available, which are very cruel. It hurts to the patient a lot. Compared to that, homeopathy gives result very smoothly and without any harsh. So guys, what are the remedies you are using for warts in your practice? What are the common remedies? Thuja, nitric acid. Thuja, nitric acid, yes. Asticum, yes. Antium crude. Mariam, according to Mariam, treated an 8-year-old wart with Dalkamara 10. Excellent. वो डलकामारा की जो लोकेशन थी वो हाथ के ऊपर, मुंह के ऊपर थी या और कहीं पे थी? मरियम सर सिर्फ हैंड्स पे था, डॉर्सम ऑफ हैंड्स पे था, बहुत बड़ा वॉट. Exactly. This is the typical affinity of Dalkamara. Wart on hand or on face. Face. उसके ऊपर Dalkamara works excellent. बट सर डलकामारा 200 दिया, 1M दिया, फिर उम्मीद छोड़ दी होगा ही नहीं, फिर 10M डेली दिया, तो डेली 10M के 1 मंथ के बाद वो पूरा गया. मतलब रिस्क लेकर बहुत हिम्मत करके दिया 10M में. सुनो ये जो लोग हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करने का डर रहता है वो सुनो. क्या दिया था? डलकामारा 10M. डलकामारा 10M ओडी डेली फॉर 1 मंथ. यस, फॉर 1 मंथ. पेशेंट को साइड इफेक्ट हुई? कुछ भी नहीं. रिजल्ट मिला? मैं फोटो शेयर कर दूंगी लेक्चर के बाद एक बार ग्रुप पे कोर्स के. नहीं, रिजल्ट मिला ना? हाँ सर, मिला. कंप्लीटली क्योर्ड. कंप्लीट क्योर, यस सर. और थूजा 10M भी साथ में दिया, वंस अ वीक. वो कॉम्प्लीमेंट्री इज रिक्वायर्ड. यस लेना पड़ता है, लेकिन वो जो लोअर पोटेंसी का माइंडसेट है उसमें से बाहर नहीं. यस सर. कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी. बहुत अच्छा लगा मरियम. ये मरियम है ना? यस सर. Okay, then Calcarea Calf. Yes, Satabdi. Then Ferrum picricum. Sorry? Ferrum picricum. Ferrum picricum, definitely. कहाँ पे प्रिस्क्राइब करोगे Ferrum picricum? Sir, in Not for you, for everyone. Hand is full of warts. This is the location of Ferrum picricum, that is written in boric. Ferrum picricum works excellently when the location is on hand. Patient hand is full of warts. Sir, also on face, na? Face के ऊपर affinity पता नहीं है, लेकिन in boric that is written. Let me check in boric. Can anyone read boric? Yeah. Become warts.
फिजिकली नॉट एग्जैक्टली हैंड, लेकिन आर्म के ऊपर होता है एकदम से। Sir, in extremities it is given, sir. Pain on the right side of neck, radiates down the right arm, locomotor ataxia, ocular stage, hands covered with warts. यस, तो स्पेशली लोकेशन इज हैंड, तो आप आर्म्स के ऊपर भी दैट इज क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आर्म के ऊपर भी इट वर्क्स। हैंड इज मोर प्रोमिनेंट डेफिनेटली ऑफ फेरम पिकरी। Sir, in Clark also it's written that face, leukoid wart on face. ओके, तो हो सकता है वी कैन प्रिस्क्राइब। ओके, और कैलकेरिया का यस, एंड Natrum sulf. नेट्रम सल्फ यस, एंड Calcarea ovitosta. सॉरी, Calcarea ovitosta. ओके, दैट इज कैलकेरिया का ना, या कोई अलग है? आई डोंट नो। Yes, sir, it is different now for leukorrhea and for warts. ओके, मुझे पता है कि the name is different, but this is another name of calcarea का, if I am not wrong. Okay, sir. So guys, I am going to share my personal experience. मैं potency के साथ बोलूँगा. Each and every homeopaths have some different experience with the potencies. So मुझे शायद 1M में result मिल रहा है, तो आपको 200 में मिल सकता है. That depends on the susceptibility of the patient जो हमको पढ़ाया जाता है. I don't know how to react that sentence susceptibility. Yeah, that is political answer. Generally, what we prescribe, that is single dose of Thuja 1M. I am talking about in general prescription. जहाँ पे कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है, कहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच नहीं है, जहाँ पे आपको कोई अनकॉमन सिम्टम नहीं मिल रहा है, उन दोस केसेस पेशेंट आया, आप जीपी प्रैक्टिस में बैठो, सर वाट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं मिल रहा है. इन दोस केसेस यूज Thuja 1M followed by antium crude 1M followed by causticum 1M. Use three remedies and trios of 3 remedies, one after another, for 3 months. This is for what? When you don't get any clue or not any specific peculiar symptom, then you can use these remedies. In almost Sir, can you please 70% repeat? patient, sorry. Can you please repeat, sir, please? Yeah. Thuja 1M followed by antium crude 1M, and followed by causticum 1M. And keep continue with this cycle for 3 months. If needed, during this cycle, if you see after prescribing causticum, patient को एक वाट चला गया है, then increase the potency of that remedy. Simple. I'm not going to tell you कि ये Thuja ने किया है, ये causticum ने किया है, ये antium crude ने किया है. When you are using polypharmacy or when you are using subsequence or series of remedies, in those cases you can't judge कि कौन सी medicine ने cure किया है. लेकिन when you get the result, keep continue with the same remedy. So daily 1M? Once a week. Once a week. Okay, thank you. This is the common 3 remedies trio we are using in our practice for warts.
जब भी कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिलते. When patient came to you with warts and it bleeds, in those cases, use acid nitricum. We are prescribing acid nitricum 200 OD. If needed, 1 m every week, and if needed, 1 m OD. Followed by Thuja. Thuja always follows in warts, that we all know. So never forget to prescribe Thuja in warts. If you are prescribing constitutional remedy, even in those cases, Thuja is required as a complementary. Each and every warts are not antipsychotic. So if you get stuck with antipsychotic remedies, if you are not getting result with antipsychotic remedies in warts, then you have to switch over with anti-syphilitic remedies. आपने ऑलमोस्ट सब रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर दी है इन केस ऑफ वार्ट्स. ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, then simply use single dose of syphilinum. And believe me, that syphilinum will create a miracle. आपका केस जो स्टक हो गया है, that can go smoothly. Even staphysagria is one of the good syphilitic remedy, and even psychosyphilitic remedy. So जब भी you get stuck in cases of warts, and when patient is having anger, उसकी वाइफ बोलेगी, उसका हस्बैंड बोलेगा कि वो इतना गुस्सा करता है कि गुस्से में चीजें फेंकता है. When that kind of anger, गुस्सा आता है तो उसके साथ बॉडी में शिवरिंग होती है. गुस्सा आता है तो ध्रुजारी हो जाती है, पैर हिलने लगते हैं. That kind of anger associated with what? Then think of this remedy, that is staphysagria. When what is associated with severe itching, I am talking about sulfur, which is not antipsychotic remedy, which is not antisyphilitic remedy. Although we can prescribe this remedy in warts, when warts is associated with itching, simply use sulfur 1 m single dose. If needed, repeat it every week. Are you getting me? Are you with me, guys? Yes, sir. Yeah. We already discussed warts on hand, that is ferrum picricum. We can think of ferrum picricum. It's a specific remedy. फेस के ऊपर वाट्स वाले बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास. तो रेमेडीज फॉर वाट्स ऑन फेस, that is causticum, that is calcarea carb, that is dulcamara, and the specific remedy is, anyone? Wart on forehead. Any one of you? Castor equi. Pen. That is castor equi. Specific remedy for warts on forehead. कोई मुझे बोले कि यूनिकॉर्न को आपको मेडिसिन देनी है, तो दिस रेमेडी, उसका जो हॉर्न है, that we can consider as a wart. So this remedy is for unicorn. You can remember like this. Wart on forehead. You know now what is unicorn? Yes. So sorry. जादुई घोड़ा. Okay. ये कैस्टर की बनती किसमें से है? Anyone of you know? That is why it is easy to remember. It prepared from the nail of the horse. तो यूनिकॉर्न को वार्ट हुआ है, उसका हॉर्न है. If you, it is easy to remember. यूनिकॉर्न को हम प्रिस्क्राइब करने नहीं जाने वाले. That is imaginary thing. So you can use castor equi.
the specific remedy, and guys believe me, it works excellently. Castor acui की another affinity कौन सी? Any one of you know? Castor acui. Any one of you using this remedy in your practice? Except warts. Cracks on nipples. Exactly. This is the specific remedy for cracks on nipples. After delivery and even after lactation phase, many female having complaint of these cracks on nipple or even in alveoli. In those cases, the common remedies are graphitis, castor acui, and the third thing is rathania, which is we are using commonly in fissures and piles. These three remedy can cure the cracks on nipples. Castor acui. Are you with me? So graphitis, castor acui, and Rathania. thank you. You can pronounce it as a rathania. Now warts on finger. बहुत सारी रेमेडीज रेपर्टरी में दी हुई है, अलग अलग फिंगर्स के ऊपर अलग अलग रेमेडी दी हुई है, लेकिन द कॉमन रेमेडी इज कॉस्टिक. If you remember, I have posted one typical horny wart on the finger on Instagram. In that kind of wart, we can use causticum. Another remedy for warts on hand, that is natrum sulph. When you are using these common remedies, along with that, you can use natrum sulph 6x and calcarea fluor 6x as a biochemical remedy for warts. These are the most common remedies which works excellently. Another remedy, that is Barata Ka. जब भी warts back के ऊपर हो, in those cases, Barata Ka helps. Even at the posterior side of arm, triceps, at the location of tricep, we can use Barata Ka. बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिनको वाट्स आर ऑन नेक, which is very common location, very common. कौन से मेडिसिन? वाट्स on neck. Any one of you guys using any remedy for warts on neck? Yes, we can use causticum. Remedies are sepia, acid nitricum, and guys, note down one remedy which is not mentioned in any repertory, that is leccan. We got good result with this remedy in our practice. Leccan for warts on neck. Sir, potency and repetition. 1 week, 1 m every week. बस इतनी ही मेडिसिन के अंदर खेलना है.
गाइस सही जगह पे सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, you will get the result. Antium crude is also one of the best remedy for warts. When patient having desire for sore, बच्चा जब भी आता है, बच्चे को वाट हो, तो बच्चे के अंदर patient don't like to take bath. And yes, one question is there, that is from Sapna Khatri. Wart on eyelid, you can use excellently causticum followed by thuja. जब भी सिंगल पार्ट के ऊपर सिंगल वाट होता है, in those cases causticum works excellent. Natrum mure is one of the best remedy for warts. Even guys, note it down, even in soft tissue enlargement, that is nasal polyp, in those cases natrum mure works excellent. जब भी palm और hands के अंदर होता है wart, in those cases I forgot to mention that is natrum mure. Yes, and another remedy, that is natrum car. If the wart is painful, जब भी उसमें pain करता है, then we can think of natrum car. That might be written in keynote natrum mure. Calcarea, Barytica, Thuja, causticum, Antium crude. These are the leading remedies. Camera for hand and face. These are the leading remedies. Calcarea floor and natrum salt we are using in biochemic. Even we can use this remedy in potencies. इससे वाट्स निकल जाए, believe me guys. Nowadays, बहुत सारे dermatologists है, they are referring us for warts. So our responsibility is more increased for warts. Nowadays, they are prescribing thuja in their prescription. Have you ever seen कि कोई skin specialist के prescription में thuja? It is very common nowadays. उसके prescription में Antium crude भी मिलेगा और thuja भी मिलेगा. Even they are using Antium crude for corn. तो guys, हमारा knowledge थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. thuja और causticum और Antium crude में से निकल के remedies will remain same, लेकिन उसकी location, उसके symptoms के हिसाब से we can change the remedy. Anyone having any query for warts? Sir, if there is a burning in warts. Okay, burning and pain or even itching, you can give salt as a complementary along with the remedy prescribed, common remedy or constitutional, whatever it may be. Caustic. On face, you can use causticum anywhere. Bunch of हो तो भी you can use it. Medicine नहीं आएगी guys. कोई specific remedy होगी. Even I can forgot during the speech. हो सकती है, लेकिन ये remedy तो prescribe करनी ही पड़ी. Although you are using any specific remedy, इसके बिना वाट नहीं जाएगी. सर जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन है थूजा, एंटिम क्रूड और कॉस्टिकम का, दैट वी हैव टू रिपीट एवरी वीक ऑल्टरनेट, मतलब वन वीक फर्स्ट वीक थूजा, देन एंटिम क्रूड नेक्स्ट वीक, देन कॉस्टिकम. ओके. इसके साथ-साथ बायोकेमिक में आप कैलकेरिया फॉर नेट्रम सल्फ दे सकते हो. ओके. एसएल दो, उससे अच्छा है बायोकेमिक दो. बराबर. ओके, थैंक यू. और इफ यू गेट कॉन्फिडेंट कि भी कॉस्टिकम वन देने के बाद पेशेंट को अच्छा हुआ है, यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. कॉस्टिकम वन मोड़ी कर दो.
और उसके बाद भी वाट्स गिर रहे हैं, वो अटक गए, देन यू कैन इंक्रीज 10 mm। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट को वाट कम हुआ है, दैट वी हैव टू नो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। Any query, any question regarding warts? Warts are very important thing, and common remedies saved us every time. So use it in the practice. हमने renal stone किया है कभी? Okay. Let's go with renal stone. Homeopaths are very famous for renal stone. Basically, I am a professor of surgery in some college. So when I start with my first session, first lecture, my first question is that surgery is scope or limitation? What do you say, guys? Surgery is scope of homeopathy or it's limitation of homeopathy? Yes, Priyanka, scope. Then how? Scope. Why? In pseudo-surgical cases. Will you please explain me what is pseudo-surgical? I'm very weak. I'm very weak in theory. So सर मतलब कॉलेज में ऐसा बोलते थे ना, इसीलिए। वाइवा के लिए आंसर अच्छा है। मतलब सर जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और होम्योपैथिक हेल्प कर सकती है, जैसे फिशर्स है, पाइल्स है, रीनल स्टोन है, ऐसे कुछ केसेस में होम्योपैथिक हमेशा काम करती है। सो वी कैन अवॉइड सर्जरी लाइक गॉल स्टोन। तो हर एक तो सर्जरी के हर एक केसेस ऐसे ही हुए ना? This is the scope. Yes, Priyanka, absolutely right. तो ये इतना बड़ा स्कोप है कि आप और किसी पे नहीं करोगे, आप सिंपल सर्जरी पे प्रैक्टिस करोगे तो यू के अनकाउंटेबल पेशेंट मिलेंगे आपको, अनकाउंटेबल। बिलीव मी, आपकी ओपीडी के बाहर बैठने की जगह नहीं होगी, गांव गांव से लोग आएंगे आपको। गब्बर का डर जो था ना, ऐसा डर आपका। बच्चा सोएगा नहीं तो बोलेगा, सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा कि ये डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि people having so much fear of go through that surgical procedure, and that is why it is the real scope. हमको पता होना चाहिए कि कौन सा केस में पेशेंट का खराब नहीं होगा। That is very important. आपने appendicitis वाला पेशेंट ले लिया and he or she having a severe pain और appendicitis rupture होगा and patient toxemia में चला गया and finally go to death. ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसे केसेस लेने हैं which are safe for patient. Even gallbladder pain, gallstone pain. So not each and every patient having severe pain in gallstone. लोगों को 5-5 साल तक गॉलस्टोन पड़ा रहता है। तो जो 5 साल तक गॉलस्टोन पड़ा रहता है, दिस इज आवर टाइम फेज कि भाई पड़ा रहा है तो उसमें प्रिस्क्राइब करें। जब पेशेंट सीवियर पेन लेके आ रहा है तो वी हैव लॉट्स ऑफ रेमेडी दैट हेल्प्स अ लॉट, लेकिन सबकॉन्शियसली कैप दैट थिंग इन योर माइंड, पेशेंट को खराब नहीं होना चाहिए। तो गॉल स्टोन का पेशेंट का पेन सीवियर हो गया, गॉल ब्लैडर रप्चर हो गई, देन इवन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, देन द इमरजेंसी कंडीशन कैन क्रिएट सम केओस, और उसमें नाम आपका खराब हो सकता है। अदरवाइज गॉल स्टोन इज वन ऑफ द ग्रेट स्कोप फॉर होम्योपैथ्स. There is no medical approach in any other
pathy except Ayurveda and homeopathy. Renal stone. Not each and every renal stone requires surgery. तो कौन से renal stone require surgery? Any criteria you know in your clinical practice when you are going to your MD physician, when you are going with some hospital? So what are the criteria are there for renal stone surgery? That must be, you must know that in your practice. Vishwas, greater than 5 minutes. What greater than 5 minutes? 5 mm, sorry, 5 mm. स्टोन साइज क्या, उसके बाद ऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं, क्या होता है? Can anyone explain the criteria in hospital? PCR. Okay. Anyone knows? हाँ, यूरेटर का डायमीटर के अकॉर्डिंग यूरेटर का डायमीटर कितना होता है? ओके, यूरेथ्रा का कितना होता है? अकेला यूरेटर देखोगे, यूरेथ्रा नहीं देखोगे तो बीच में अटक जाएगा. Generally, the criteria in hospitals are like this. If the renal stone is below 4 mm, go with medication. If it is between 4 to 7 mm, then go with flush therapy. And more than 7 mm, they generally suggest for surgery. That's a criteria hospitals. And what is our criteria as a homeopath? हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए ना हमारे पास. आप बोलो कि 20 mm की पथरी हम निकाल देंगे, लेकिन क्राइटेरिया क्या? निकाल तो दिया, लेकिन क्राइटेरिया होना चाहिए ना कुछ. पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, किडनी के अंदर पस फॉर्मेशन हो रहा है, होम्योपैथ बोलेगा निकाल देंगे. 20 mm हमारे लिए तो छोटी. ऐसा नहीं होना चाहिए. If you are treating a patient of renal stone more than 8 or 7 mm, then guys, constantly check creatinine. Constantly check the hydronephrosis in sonography. As I always say, कि patient बिगड़ना नहीं चाहिए होम्योपैथ से. आपसे अच्छा नहीं होगा, that is allowed. लेकिन as a homeopath, even as a my student, I strongly recommend you कि आपसे खराब नहीं होना चाहिए. पेशेंट बिगड़ेगा आपकी ओपीडी में, that is not allowed. So you must know the criteria. एक क्रिएटिनिन करवाने में कुछ नहीं जाता है. एक हाइड्रोनेफ्रोसिस चेक करने के लिए सोनोग्राफी करवाओ, कुछ नहीं जाता है. वैसे भी रीनल स्टोन की साइज देखने के लिए हम सोनोग्राफी करवा रहे हैं, क्योंकि मोर देन 7 mm होगी तो इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द रीनल पैसेज और उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है. तो दिस इज आवर क्राइटेरिया. In those cases, if the hydronephrosis is constantly increasing, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि don't take the patient with renal stone and hydronephrosis. 4 mm या 5 mm की पथरी वाले पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, लेकिन वो आपके ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए. पेशेंट आपने क्रिएटिनिन करवाया और उसके 15 दिन के बाद वापस क्रिएटिनिन करवा रहे हो, and if it is increasing, then guys, now it is not our scope. Now it is our limitation. जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो guys, पेशेंट को खींचो मत. Simply advise patient to go for surgery
or meet any MD physician or anyone, क्योंकि जो किडनी डैमेज हो गई तो फिर वो होम्योपैथ भी हेल्प नहीं कर पाएगी. Okay guys, are you with me? Yes, sir. Yeah. So this is our criteria. आप 20 mm की पथरी निकालो, 25 mm की बड़ा पत्थर निकालो, नो मैटर्स. 10-10, 20-20 mm की 4-5 पथरियों का झुंड निकाल दो, नो मैटर्स. लेकिन क्रिएटिनिन चेक करते हो. It is sometime not digestible for the other stream. That 15 mm की पथरी, 15 mm की पथरी is came out from the 8 to 9 mm diameter of urethra. लेकिन this is what we see in our practice. In my college days, मेरे प्रोफेसर बोलते थे कि पेशेंट मेरे हाथ में पथरी लेके आया. So I used to laugh on them. कि हाथ में कैसे पथरी लेके आ सकता है यार? And believe me guys, I have a collection of pathri in my clinic. I can show you. If I get it. Wait. Yes, I have. This is the collection of pathri. Can you see it? इसको पथरी नहीं, इसको पत्थर बोलते हैं बड़ा. Check it out. See. See. Is it visible, guys? Yes, sir. This one. छोटी सी. तो पेशेंट लेके आते हैं. इसमें कोई मजाक नहीं है. पेशेंट को बोलो, चारणी को क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं? छन्नी. हाँ, छन्नी. वो छन्नी के अंदर यूरिन पास करें. सी. पेन होता है ना, लेकिन सभी पेशेंट को नहीं होता. उसका भी एक क्राइटेरिया बताओ. पेशेंट को बोलो कि यूज्ड टू पास द यूरिन विद दैट छन्नी. तो जब भी निकले तो उसको पता चले. छोटे छोटे बेसिकली पथरी ब्रेक होके निकलती है. एक्सप्लेन द पेशेंट कि पेशेंट एक डर में होता है, एक फियर में होता है, तो उसको बताओ कि भाई ये आपकी 14 mm की जो पथरी है वो ऐसे ही नहीं निकलेगी. इट जस्ट ब्रेक डाउन इनसाइड एंड उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे. तो वो छन्नी लेके रखो और वो बाहर आती है तो लेके आओ. इट्स गुड फॉर अस. एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी. सो कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे? What are the common remedies we are using for renal stone, renal colic, renal pain? Sir, renal colic में osmium can 30 I have given. Osmium can पक्का दे सकते हैं. और Lycopodium. Lycopodium, yes. Sarsaparilla, Yes. Manoj Kumar, Tabacum. Happy to hear Tabacum in list. Happy to see that. Berberis vulgaris. Sarsaparilla. Okay, yes. Hydrangea. I give hydrangea if stone more than 10 mm as a stone Sorry? breaker. Sorry. I give hydrangea instead of SL if the stone is more than 10 mm as a stone breaker. Okay, yes. Not more than 10 mm. You can use it even 4 mm as a stone breaker. Okay. Stone breaker के लिए hydrangea is one of the best. Apis, yes, Manoj Kumar. Apis कहाँ से लेके आया? Happy to see Apis in the list. How? Yes, Nux vomica, Sarsaparilla. मनोज कुमार अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद रीनल स्टोन में, मुझे ऐसा लग रहा है. Yes, stone stuck in urethra. Okay, I will let you know कहाँ पे use करते हैं. This is the
one of the indication. Cantharis, okay. And what about sarsaparilla? Manoj, आपसे सुनने में मजा आ रहा है. That is why I'm asking. sarsaparilla कौन से renal stone में यूज करते हैं in general? Sorry, right side. Okay, no. Middle one. Right भी नहीं, left भी नहीं. That is in bladder. When renal stone is in bladder, then think of sarsaparilla. If I'm not wrong, Sabal is for bladder stone. Okay. We have to check in Fatak. Can anyone open your Fatak? Both, because it's a confusion. Sarsa or Sabal. Okay, वो सारसा और सेबल का कंफ्यूजन दूर करते हैं थोड़े टाइम में. Let's start with the remedies. Lycopodium, yes guys, it is one of the great remedy when patient having pain on right side, when patient having gastric complaint along with renal stone, when patient having nauseative feeling and even flatulence or eructations along with the renal stone pain, renal colic, you can think of lycopodium. You can use lycopodium as a specific remedy, or even you can use in those patients having the typical constitution of lycopodium. Lycopodium having a superpower to break out the tendency of renal stone. आपके पास जितने भी रिकरेंस रिनल स्टोन वाले पेशेंट आते हैं, सर मुझे 4 साल पहले 2 पथरी थी, 2 साल पहले 5 पथरी थी, 1 साल पहले 3 पथरी. In those patients, lycopodium works as a breaker of that tendency. So guys, homeopaths can break the tendency of renal stone, creating renal stone. Another remedy. Their potency? You can start with 200. You can prescribe it 200 OD, and if needed, 1 m every week. These are the common prescription of lycopodium. No idea about alumina and renal stone. Sorry. Right. Another remedy, that is nux vomica. Okay. Another remedy. Oh, 6 messages are there. Okay. Yes, Mariam, calcarea renalis. We are coming to that point. Lycopodium, as we discussed, having it works as a breaker of tendency. Like that, calcarea renalis is one of the remedy which is mentioned in boric in relationship of calcarea. In calcarea का जिसके relationship में mention किया हुआ, that is calcarea renalis. These two remedies having a tendency to break the recurrence. We all know that nux vomica is one of the best remedy, and my friends used to say that right side of renal stone use nux vomica. That's it, पथरी बाहर. मुझे ऐसा पथरी बाहर वाले रिजल्ट नहीं मिले अभी तक, लेकिन I am using nux vomica in right sided renal stone along with that constitution of natramune. So nux vomica. China, I'm also not using frequently for renal stone. So. Nux vomica having the typical stool recurrence, constant urging to pass the stool.
that habitual to taking some stimulant like cigarette, smoking, that tobacco, chewing, liquor, anything, along with the typical mentality of nux vomica, fastidiousness, with the ambitiousness. Even nux vomica is kind. So all the criteria, if you get, you can prescribe nux vomica. You can use it in 200 potency. And if you get the mental picture, you can prescribe nux vomica 1M. When there is renal stone in bladder, as I already told you, the remedy is sarsaparilla. ये sarsaparilla का एक किसी को मिले तो you just share in the group. कौन सी बुक में that I not remember right now. वो फाटक में होगा शायद. फाटक में Yes, guys, Apis. Apis is one of the best diuretic. When I am treating patient of renal stone, I used to prescribe Apis 200 OD in each and every patient. Believe me, guys. It works excellently as a diuretic. So, when the renal stone break down, in those cases, उसको बाहर निकालने में Apis help. Yes, generally we are using Apis at morning time at OD because we used it as a diuretic. So guys, never use diuretic at night. तो मेरे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में Apis नाइट में नहीं होती है, whatever it may be the condition. This is the use of Apis, guys. Sir, potency, please. 200 OD. अभिनव अभी सुनीमा सरकार से मिल के आए. Abhinav, will you please share your experience to meet the legend in homeopathy? Abhinav, are you there? Yes, please. कैसा रहा सुनीमा सर से experience आपका? I just pop up your name on this screen. That is why I'm asking you. If I'm not wrong, you were there, na, in that Pune session. हाँ सर, मैं था वहाँ पे यार. कैसा रहा experience? तो बहुत अच्छा था एक्चुअली. वो ऑटिज्म में थे केसेस, सारे केसेस जो थे वो मेंटली चैलेंज पेशेंट जो थे उनके थे. तो एक्चुअली लास्ट 1 मंथ में हमको वहाँ पे उनका पहले केस हिस्ट्री था हमको. पहले उनके केसेस लेके फिर सर 2 दिन के लिए आए थे. तो हमको उनको केसेस प्रेजेंट करना था, फिर उसके ऊपर फिर सर ये कर देते हैं. वगैरह ऐसे. बढ़िया. कैसा रहा सर से मिलके, कैसी खुशी हुई? वो सर वो तो हम तो सुबह 10 से लेके रात को 9:30 तक बैठे थे सर. और सर उनको थकते ही नहीं सर. वो उनकी तरफ एक्चुअली पेशेंट लगे आते 1 by 1 पेशेंट आए रहे. ऑलमोस्ट 1 डे में हमने ऑलमोस्ट 100 के ऊपर केसेस देखे सर. ग्रेट. ऐसा लगे कि जैसे एनएच में जैसे होता है कोलकाता में, सेम ऐसा था यहाँ पर. जबरदस्त. It was one of my dream to learn from him, but somehow due to some responsibilities, I was not able to go there. But Yes, he is real legend. Yes sir. For me, he is Bhagwan in homeopathy. Yes sir, he is sir. Yeah. Yes sir. Yes. Yes, Keta. Sarsaparilla stone in bladder given in keynote. Okay, keynote में लिखा हुआ. The remedy is sarsaparilla. So, हाँ, हम Apis पे थे. Apis works as a diuretic. Colocynth, guys, works excellently for renal colic.
What are the common modalities of colocin colic pain? Anyone? Guys? Double bending and pressure amelioration. Yes, that is colocin. And what about McFoss? Sorry. Same as colocin, guys. Both having same modality. Bending forward amelioration, bending double amelioration. And one more modality is prominent, that is in McFoss, that is foam application amelioration. Yes, Vishwas, heat amelioration. We are talking about renal stone. Now, what is the opposite modality to colocin? Yes, that is diascoria. And what is the middle remedy for between the colocin and diascoria? तो अभी मेडिसिन दी वो कौन सी दी? Abdominal pain is ameliorated by sitting down. आगे झुकता है तो नहीं हो रहा है कम, पीछे झुकता है तो कम नहीं हो रहा है, बैठा है तो अच्छा लगता है. Between the diascoria and colocin. No, we know. उसको तो खोलो दिया. That is synovial nigra. Open synovial nigra in your body. जब भी आप रीड करो मटीरिया मेडिका, दिस इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गाइस. जब भी आपको कोई इंटरेस्टिंग मोडालिटी मिले और उसकी ऑपोजिट मोडालिटी मिले या फिर उसको रिलेटेड कोई मोडालिटी मिले, तो यू जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज टू रिमेम्बर इजीली. कल कोई ऐसा बंदा आएगा कि वो बोलेगा कि मैं ऐसे क्रॉस करूं, आधा हाफ करूं तो अच्छा लगता है, ऐसी मेडिसिन होगी समवेयर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी. वो हमें ढूंढनी है. कैन एनीवन रीड synovial nigra from Boric? Colic pains comes on while bent forward, better sitting up straight. Yes, आगे झुकता है तो दर्द बढ़ता है. Sitting straight gives amelioration. That is synovial nigra. So we can use these three remedies as a colic remedy: McFoss, colocin, then diascoria. Along with that, we can use synovial nigra if we match with the modalities. This is the beauty of homeopathy. मजा आता है. Yes, all the mother tinctures you all know. Berberis vulgaris mother tincture use कर सकते हैं, Osimum canum use कर सकते हैं, hydrangea use कर सकते हैं, Pereira brava use कर सकते हैं. Pereira brava में यूरिन कैसे पास होता है guys? Any one of you know how Pereira brava, and even in Chemophilia, yeah, उसमें how patient urinate. Can emit urine only when he goes on his knees, resting head firmly against the floor. Can anyone explain? कैसे? पेशेंट सोज नी के ऊपर सो जा रहा है, आधा लेट रहा है और प्रेसिंग हिज हेड टू द फ्लोर और द वॉल एट फ्रंट साइड. इतना जोर करना पड़ता है उसको. Then and then only he or she can pass urine. I have not yet get this modality in my practice. मैं उसका वेट कर रहा हूँ. Then I will prescribe this. This is the typical position in which patient is able to pass urine.
Are you with me? Yes, sir. बोलते रहो. सो गए ऐसा नहीं लगना चाहिए. And what about that chemophilia? Open your chemophilia. Chemophilia. Yes, that is the remedy. Yes. Chima, so something. Yeah, I just Hemophilia. pronounce it as a chemophilia. Unable to urinate without standing with feet wide apart and body inclined forward. This is the typical location, the typical modality, position, wide apart. उसके पैर वाइड होते हैं and patient is bending forward. ऐसे झुके तो ही यूरिन पास होता है. Are you with me? Body inclined forward. Body आगे की तरफ झुका है, झुकाइए and पैर are apart. If you get this modality, guys, it works excellently. Believe. Namaz posture, yes, true. Even in Muslim male, they are passing urine with the sitting position due to their some religious cause. तो आपको ऐसे पेशेंट के अंदर ये पोजीशन मिलेगी, which is very common. These are the common remedies जो होम्योपैथ्स को जीपी प्रैक्टिस से बियॉन्ड बनाता है, स्पेशलिस्ट बनाता है. If you remove the stone from any family member, आपके वहाँ लाइन लग जाएगी फैमिली में से. Without operation, you are treating patient for renal stone, which is very common condition due to so many reasons, due to water, due to lacking intake of water, due to atmosphere and body tendency. But when you, yes, how can I forget belladonna? Any one of you know the use of belladonna in gallbladder stone or even in renal stone? Pain कैसा होता है? No. No. Guys, I'm searching one book, that is why I'm not in screen. Any one of you know? No. Needle like pain. No. Anyone having that pointer book? Pointers to common remedy. Pointers to common remedy. By Emil Tyler. Firefly. Select your remedy. Guys, anyone having that book? Fancy it? Pointer. Sharp stitching pain. No. I would like to share one paragraph of some book. Book name is Pointer. So, Helensky stone देखो, GB stone देखो. That is therapeutic book. I'm not getting the book. Wait a minute, guys. Is there? Introduction में that is mentioned. Yes. Can anyone read this belladonna from M.L. Taylor? Please read it. नजदीक आ जाओ. Starting. Guys, listen it carefully. The way he explained where and how belladonna works in cases of gallbladder, colic
and in renal chronic. Can writes under belladonna, spasm, general spasm, and local spasm. Spasm of little canals of the circular fibers of tubular organ in the ductus communis. Choledochus, there is a clutching, or it may be in the cystic duct, that the circular fibers clutch that the little bit of stone and will not let it through. The passage is large enough to admit it, and it has started to go through, but the irritation of the part causes a spasm, and it clutches that little stone. You put a dose of belladonna on his tongue, the spasm lets up, the stone passes on, and there is no more trouble. In 15 minutes, the gallstone colic is gone. There is never In कितने मिनट में? In 15 minutes. In 15 minutes, okay. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई recent homeopath नहीं कर रहा है. That is written by Emil Taylor. There is never failure in homeopathic prescribing in gallstone colic. The symptoms are not always belladonna, but in this instance where that horrible sensitiveness is present, it's bad. किसी को पता चला? How belladonna works in gallbladder colic or in renal colic? Any one of you can explain me? What does it mean? What does this para means? Can you? क्या कहना चाहते हैं? कवि की कल्पना क्या है? एमएल टेलर जो कवि है, उनकी कल्पना क्या है? उनका एक्सपीरियंस क्या है? Yes, please. It goes into the spasmodic pain. हाँ. It will act onto the muscles fiber and it will relax, and that's why the stone will easily come out and the pain will reduce. And as the belladonna is also having the inflammatory action, so definitely it will act into the pain reliever. Yes. Guys, believe me, जब भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको severe pain of gallstone or renal stone, whatever it may be the condition, आप सोनोग्राफी करवाओगे इमरजेंसी में और यूरेथ्रा के अंदर स्टोन फंस गया है. Urethra, I'm talking about urethra at the end of that part, or anywhere जो circular part है. I'm not talking about bladder, लेकिन ureter के अंदर renal stone है, or in gallstone which is in the canal जो फंस गया है. In those cases, when we use belladonna works on circular fiber. तो वो सर्कुलर फाइबर के ऊपर उसकी इफेक्ट की वजह से it just came out, and simultaneously due to inflammation reduction of use of belladonna, inflammation is reduced and patient get relief. So believe me, belladonna can reduce the pain. Simultaneously, it helps us to remove the stone. कवि ने मस्त बोला है, it works on circular fiber. तो जब भी any condition कि जो circular fiber हो, कोई भी कैनाल हो जिसके अंदर कोई भी चीज फंस गई हो, remove out, use the belladonna. That is written in Emil Taylor. Pointer. Name of the book is Pointer. Yeah. Pointers to common level. Guys, पढ़ते रहो. Yes. The next question is potency, and next question is repetition. कवि ने ऐसा बताया है कि 15 मिनट के बाद तो स्टोन निकल जाएगा, पेन चला जाएगा. So use it frequently. Ask the patient to use it every 10 minutes. In acute severe pain. I am using in her potency, that is 1M. मेरे पास एक बच्ची आई थी. She was just 14. 14 की एज में typical right side abdominal pain.
व्हाट यू थिंक क्या हो सकता है? यस, फर्स्ट केम इन माइंड, दैट इज appendix. Okay, then another cause is renal stone. Then these two came in my mind also. लेकिन उसको गॉल ब्लैडर स्टोन निकला. At this age, this was my first case in बच्चा. At the age of 14, I have seen a gall bladder stone. मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी at the age of 5 years कि जिसको gall stone था, which was not diagnosed by me. लेकिन ये 14 साल के अंदर जिसे मैंने डायग्नोस किया, that is rare. What do you learn from this example? Go for sonography. आप क्लिनिकली प्रिडिक्ट करोगे, लेकिन सोनोग्राफी करवाना जरूर. और मेडिसिन आर रिमेन सेम. आप बर्बेरिस दे सकते हो, लाइको दे सकते हो, आप चैलिडोनियम दे सकते हो. चैलिडोनियम है टिपिकल पेन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन. टिपिकल राइट साइड पेन होता है, रेडिएटिंग टू बैक होता है, रेडिएटिंग टू चेस्ट होता है. Even chelidonium you can prescribe in renal stone if you get the pain, typical pain of chelidonium. Even diagnosis is required. Go for sonography. मैंने पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको मोस्ट प्रोबेबली अपेंडिक्स आएगा. Rebound tenderness was not there, but the typical pinpoint pain was there. उसको निकला जीबी स्टोन. Although patient is still with me, कि मैंने डायग्नोस तो करवाया, still under treatment, अभी मिटा नहीं है स्टोन. After 7 months of treatment, a patient is under treatment. These are the common remedies, and you get surprised after listening the stanza of Emil Taylor. जब मैंने first time पढ़ा था, तो it was surprising like of sentence. I have never heard such kind of pathological correlation or physiological correlation with medicines before reading this thing. The way he explained, Kavi ki kalpana, I used to say. Yes, Santi, can you repeat the name of book? Please repeat the name of the book. Pointers. Two Common Remedies by Dr. Emil Taylor. I am weak in remembering the name. That is why I just forgot it. ये अभिनव गलत मत लगाना, लेकिन कभी सामने आओ, आप नाम से मुझे बोलोगे, तो I am very weak to remember. Okay, guys. Yes, what about tabacum? Tabacum is excellent remedy for left-sided renal stone. And when patient having associated deadly nausea, which is written in Materia Medica, and practically excessive nauseative feeling, that is tabacum. Use 200 potency every week. If needed, use it 200 OD. First time I experienced tabacum in my father. First time I go through tabacum experience in my father case. That was kind of miracle. I don't know what happened, but the pain was severe. Generally renal stone के pain वाले patient आपको home visit में आएंगे, आपके घर पे आएंगे, not home visit, और उनको पेन होगा, that is renal stone. तो renal stone का पेन mostly रात को ही होता है, या फिर early morning 5 to 6 बजे आपका फोन बजे और patient is telling you कि मुझे severe abdominal pain है, तो your first thought must be renal stone. Patient घर के अंदर कूदता है, इतना पेन होता है. Renal stone pain is a third severe pain
in the world? What is the worst pain in the world? That is the anyone? Yeah, that is childbirth, labor pain. First pain. What is the second pain? Any tooth pain. Yes, dental pain is the one of the worst pain. That is the second severe pain in the world. And guys, there is less remedy in allopathic part. Very less remedies. Because this is the nerve pain. For dental pain, patient बहुत suffer होता है for pain. In those cases, our remedies works excellent. My brother is dentist. So he is using so many homeopathic remedies in practice. He is prescribing literally homeopathic medicine to his patient. His clinic is above my clinic, so he prescribe it in his prescription as a dentist, and the patient is collecting remedies from our clinic. क्या repeat करो? विश्वास. Medicine for what? डेंटल पेन की कोई मेडिसिन मैंने बोली नहीं है. बहुत सारी मेडिसिन है. We will discuss it later. Anyone having any query till now? का बोलो बोलो. का एक पेशेंट है किडनी स्टोन रिकरेंट का, उसको सालों से है, काफी बार लेजर करवा चुका है, तो अभी 6 मंथ से ट्रीटमेंट चालू है मेरा. तो जो उसके बिग स्टोन है 6, 7, 8 mm के, वो एवरी मंथ एक स्टोन आ जाता है बाहर. लेकिन 3 mm के 3 से 4 स्टोन है जो हट ही नहीं रहे वही से, मतलब उसी लोकेशन में स्टक है किडनी में, राइट साइड में. कौन सी लोकेशन? राइट साइड ऑफ किडनी, अपर कैलिक्स. किडनी के अंदर है? कहाँ पे? अपर किडनी में है, अपर कैलिक्स. ओके, अपर Yes, कैलिक्स. वो 3 to 4 mm के वैसे के वैसे हर रिपोर्ट में वही आता है, और हर महीने उनके स्टोन्स कंटिन्यूसली निकल ही रहे बड़े वाले. पर वो पता नहीं, मुझसे का शायद सोनोग्राफी रॉन्ग है या पता नहीं क्या, तो कोई न्यू जगह से कराए तो भी वो 3 स्टोन तो हट ही नहीं रहे वहां से. तो फिर इसमें फिर मुझे क्या देना चाहिए? उसमें लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करो. जनरली बेसिकली रीनल किडनी के अंदर जो भी स्टोन होगा विच आर नॉट पेनफुल, वो जनरली पेन नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन पेशेंट इज इन आवर अंडर ट्रीटमेंट तो उसको निकालना तो है ही. Yes. तो उसके लिए लाइकोपोडियम वनेम यूज करो, एंड अलोंग विद दैट अपनी हाइड्रेंजिया मदर टिंचर भी यूज कर सकते हो. अभी से हाइड्रेंजिया चालू है और उनका साइरिशिया चालू है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो अभी जितने भी निकले वो प्लेन साइरिशिया से ही निकले हैं. ओके, तो अभी लाइकोपोडियम और ये कैल्केरिया रिनालिस शुरू करो. वो भी दे दिया था, once a month I've given 2 doses. कैल्केरिया रिनालिस 200 ओडी चालू करो. अच्छा, ओडी. ओके, एंड कुछ मिले तो बताना. ओके सर, थैंक यू. Anyone, any query, any question regarding these two acute conditions? Sir, I had a patient of renal stone, right side renal stone in calyx, I think. And I gave lycopodium 200, and in within 3 days, 7 mm ka tha, sir. And within 3 days, wo bahar aa gaya tha. And the patient was very happy because he was thinking of going for surgery. But then someone recommended to take homeopathy, and he was very happy. 3 days में आ गया. Madam, I can't believe that homeopathy इतना fast work. वो आपको कितने पेशेंट भेजता है रीनल स्टोन के? उसके बाद नहीं सर, उसके बाद आते हैं छोड़ा, मतलब बहुत सारे हैं पेशेंट्स, बट इनका मुझे ना लाइक सर आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टोन उनको बहुत अच्छा रिलीफ था, बट एडिमा ऑफ लेग्स आ गया था सर. ओके, फिर उसके लिए मैंने अपीस भी दिया था, अपीस भी काम नहीं किया, तो मैंने अपोसाइनम ट्राई किया था. फिर अपोसाइनम भी नहीं हुआ, तो मतलब उसके बाद मेरा लाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया. लाइक
स्टोन का उनका मेन प्रॉब्लम था, तो स्टोन बाहर आ गया था। बट अभी उसके क्या हुआ, किधर हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एडिमा ऑफ लेग्स था, अपीस भी दिया, काम नहीं किया, अपोसिनम दिया, फिर काम नहीं किया। चेक हुआ उनका? हाँ सर, वो भी 0.6 0.7 था बस, क्रिएटिनिन कुछ नहीं था। बट मैं उनको रिपीटेडली बोल रही थी कि जाके आप यूएसजी करवाओ, क्या है किधर है हम पता कर लेंगे। बट दे वर लाइक नहीं, स्टोन तो बाहर आ गया ना मैडम, आप बस मुझे ये कम करवा दो, ये कम करवा दो। आई वाज लाइक अभी अपीस भी मैंने जो भी मेडिसिन, इंडिकेटेड मेडिसिन है, मैंने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, सर देखो स्टोन प्रॉब्लम था आपका, वो आ गया बाहर, तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। स्टोन आ गया है मतलब क्लियर हो गया, अभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हो गया हो और एडिमा आ गया हो। फिर भी मैं उनको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, दे वर नॉट रेडी टू टेक यूएसजी एट ऑल। सो देन क्या करूँ अगर नेक्स्ट पेशेंट ऐसे आए तो मैं क्या करूँ सर फॉर एडिमा ऑफ लेग्स? एपिस कई बार वर्क करती है, लेकिन इफ एपिस फेल्स एंड पेशेंट इज थर्स्टी, यू कैन यूज एपोसाइनम, जो आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। If eposinum fails in thirsty patient, you can use acetic acid. Okay, sir. That is also thirsty patient. Okay. Edema with thirst, that is eposinum and acetic acid. और वो पेशेंट का एक डॉपलर भी होना चाहिए, जो उसका पेडल एडिमा नहीं कम हो रहा है, क्योंकि रीनल स्टोन इज नॉट द कॉज ऑफ दैट पेडल एडिमा, बराबर? तो उसका वो रीजन ही नहीं है, वो निकला और साइमल्टेनियसली कुछ हुआ, लेकिन उसका कॉज तो रूल आउट करना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो रूल आउट करने के लिए आस्क द पेशेंट टू गो फॉर डॉपलर। ओके सर, ओके सर, थैंक्स सर। हाँ जी बोलो। सर अगर कलर ड्रॉपलर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है लेग में और उसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा तो फिर क्या दे सकते हैं? मेडिसिन तो ये कॉमन ही रहेगी, मेडिसिन नहीं चेंज होगी। एपोसाइनम, एपिस और एसिटिक एसिड, ये 3 मेडिसिन आप दे सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो या ना हो। लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो इन दोस केसेस मेडिसिन इज नॉट हेल्पिंग मच, ज्यादा हेल्प नहीं करती है। सर कार्बो एनिमलिस भी इन केस में करती है क्या? क्या? कार्बो एनिमलिस? हाँ, कार्बो एनिमलिस क्या? ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इन केसेस में एक्ट करेंगी? पीवीटी में कार्बो एनिमलिस का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। कार्बो एनिमलिस विद सीवियर वीकनेस हो then we can use this remedy, लेकिन not having personal experience for that deep vein thrombosis। DVT के लिए जितनी भी हमारी एंटी हेमरेजिक रेमेडीज है, those all we can use। Okay sir, thank you। Yeah. Any question for today's session? Sir, another doubt. I had a patient of I am not sure it is warts or what, because उसके मिडल लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर में और थंब के लाइक कॉर्नर में जैसे ट्री का ट्रंक होता है ना सर, वैसा रफनेस की जैसे स्किन हो गया था। वो मतलब जब स्टार्ट हुआ था छोटा सा स्टार्ट हुआ था, और जैसे अभी when he was 12 it started, now he is 20 years old and वो उसका डायमीटर जो है वो ग्रो होता जा रहा है। तो आई प्रिस्क्राइब्ड एंटीम क्रूड, तो चेंज नहीं था कुछ। फिर थूजा भी प्रिस्क्राइब किया तो भी कोई चेंज नहीं था। फिर देन दे कंसल्टेड मी फॉर कि क्रायोथेरेपी यूज करूं या ट्राई करूं या नहीं, दे आस्क्ड। सो आई टोल्ड ओके यू कर लो, मुझे नहीं मतलब मुझे इसके बाद क्या यूज करना है वो नहीं पता चला सर। सो उसको वॉट से कंसिडर करें या क्या कंसिडर करें सर? वो तो पिक्चर देख के बता सकते हैं, लेकिन वो वाट हो या सिंपल एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, रेमेडीज विल रिमेन सेम। वो हिस्ट्री भी है सर, वो उनके फादर को भी था, उनके फादर को फोरहेड में था, तो उनको क्रायोथेरेपी किया, तो उसके बाद उनको कुछ हुआ नहीं, बस इनको है अभी, बेटा को है। हाँ, तो मेडिसिन तो हमारी सेम रहेगी, वो वाट होगा या एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। तो थूजा तो आप दे ही सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि वाट्स ऑन हैंड, तो उसके ऊपर रेमेडीज आर डलकामारा, नेट्रम सल्फ जो फिंगर के ऊपर है, नेट्रम म्यूर भी दे सकते हैं और फेरम पिक्रिगम भी दे सकते हैं। ओके सर।
Thank you, sir. तुझा भी रिपीट कर सकते हो. Any question? हेलो सर, रीनल स्टोन का एक पेशेंट है मेरा और उसको ऑन मेडिकेशन है सर. एक दिन रीजा की है? यस सर. रीजा बोलो बहुत सर टाइम के बाद आपकी आवाज सुनी. हाँ सर, पेशेंट ऑन मेडिकेशन है पर उसको एक बार स्किन इचिंग का कंप्लेन होता है जो कि सीकेडी में शायद होता है नाइट में. तो सर अगर सिर्फ उसके बाद उसको रिलीफ हुआ है, वापस नहीं हुआ है, तो अगर ऐसा पेशेंट को हो तो हमें क्रिएटिनिन और यूएसजी के लिए उसको रेकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हुआ वापिस? रिनल स्टोन का पेशेंट है, ऑन मेडिकेशन है. बाकी सिम्टम्स सब उसके नॉर्मल है, लेकिन वन डे उसको स्किन पे इचिंग होता है और बम्प्स फील होता है एट नाइट. एक ही बार या रोज? नहीं, एक ही बार हुआ है सिर्फ. ओके. तो अगर ऐसा हो तो हमें तुरंत उसको क्रिएटिनिन और यूएसजी रिपीट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? तो एक आध बार खुजली हो तो उसके लिए कहा तुरंत करवाओ, नहीं जरूरी. हाँ वही सर. तो रिपीटेडली हो रहा हो हाँ. वी कैन थिंक ऑफ इट. और सोनोग्राफी तो रीनल स्टोन है तो पहले हो ही चुकी है. हाँ. तो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं पता चलेगा. और क्रिएटिनिन जो रिपीटेडली इचिंग हो रहा हो तो वी कैन थिंक ऑफ इट. ओके सर. और पेशेंट को हेमेचूरिया एक बार हुआ हो तो भी वो कॉमन एज अ कॉमन सिम्टम हम ले रीनल सकते हैं? स्टोन में हेमेचूरिया हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. ओके सर. पथरी जब भी ऊपर नीचे होती है उसकी साइज, उसकी लोकेशन चेंज होती है तो वो हेमेचूरिया क्रिएट हो सकता है. एक आध बार हो तो नॉट गो फॉर रिपोर्ट्स, वेट एंड वॉच. पेशेंट को बोलो कि इसकी वजह से हो सकता है. सो रिपीटेडली हो रहा है तो एक्सेसिव ब्लड आ रहा है तो वी कैन फॉर दैट अदर रिपोर्ट्स. ओके सर, थैंक यू. बाकी लाइफ में सब सही है ना? हाँ सर. मिलते हैं शॉर्ट टाइम में. श्योर. 26 जनवरी आपको आना है. हाँ सर. Sorry, 29th. Sorry. 29th. We have arranged a seminar to all of you. गौरांग सर आने वाले हैं, which is youngest famous homeopath in India, जिनकी बुक्स भी है बहुत सारी. So guys, we always appreciate the knowledge. We always appreciate the homeopaths. ऐसा नहीं है कि भाई मैं महान हूँ, ये महान नहीं है. लाइफ में ऐसा कभी मत करो, कभी मत सोचो. अप्रिशिएट. वो बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड उनका पेशेंट्स है. गाइस, इफ यू गेट चांस, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, यू अरेंज द सेशन. उनके सेशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन जनरल, लेकिन हमने पूरा डे का सेशन रखा है विच इज लिटिल बिट cheaper than his routine expense. So you can join us. Even you are not able to come physically, you can join in online sessions. पूरा दिन ऑनलाइन रहेगा उनका. It will be more fun. बहुत सारी मस्ती होने वाली है. And one secret is there which I am going to reveal with my routine students. उनकी एक बुक भी लॉन्च हम करने वाले हैं in that day. So history is going to become. So be a part of that history. मजा आएगा. Vishwas, please give chance to take pic with him. Definitely, sir is very forward. Especially request भी करेंगे. So not an issue. He is no more. He is like a celebrity. So definitely हम भी फोटो लेंगे उनके साथ. So any question, guys? Any query? Okay, we end up these sessions over here. This session over here. See you in next session. In between, if you are interested to come Karnataka, my next session, the whole day session in National Homeopathic Seminar at Karnataka next Saturday. If you are interested, or if you are living nearby, anyone is from Karnataka? Okay guys, see you in next session. Till then, keep prescribing, keep learning,
Keep reading. Goodbye. Stop recording.